Yeah, it's hard to say until we get out on the middle, but yeah, it does look like a good wicket. And you're still happy playing three spinners? It's a different approach for the Australian side? Yeah, it is. I think the guys have performed really well last week. I still think this wicket will take spin as the game goes on. So, yeah, we'll see how we go. You said it could be your last test in Australia, in India. Surely you're not serious? I don't know. I'm getting older, so it's 4 years away. It's a long time. We'll wait and see. Go well, Steve. Thank you. Cheers. Right, Rohit Sharma alongside me. You might have batted first too, wouldn't you? Yeah, we would have. But I guess we know what we're doing now. We've got to come out and do that well. And your side for today? Yeah, we've made one change. Siraj has been rested and we've brought back Shami. Now, there's been a long time between the end of the last test match and the start of this one. Is that good? Does it allow you to forget what happened? How does that work for you? Yeah, no, I think it's always nice to have some time off, understand what we did right, what we did wrong, just to regroup, as a team. Always nice to have that time off. You can reflect on so many things as well. But yeah, we prepared really well for this one. Hopefully, we can get what we want here. And your take on the surface you're playing on today? Yeah, I mean, not the surface what we saw in the first three test matches. It looks like a very good pitch. I don't know when it's going to start turning, but yeah, looks a good pitch. Obviously, I hope it stays like that for all 5 days. Because you're going to bat second, of course. So well done, Rohit. Take care. Thank you very much. Right, there you are then. The Australian captain, Steve Smith, has won the toss on this momentous occasion. Australia will bat first. In this series, there was a gentleman from Baroda who was playing for Baroda in the Ranji Trophy. He got 100 in each innings, Mr. Vijay Hazare. On consecutive days in Adelaide, he got 100. Of course, Jasu Patel comes from this state with 9 against Australia. Richie Beno's team. You got Tiger Pataudi, Dean Jones, Hermit. Dean Jones being taken, he was on a drift. Yes, in the tight test heat. match. Yeah, and Steve Ward. As you come across. 75 years is a long time, it's great. Great. And you see from the other side, you'll see all the players who graced the two teams in that span of time. Some terrific players. And the great thing is, as competitive as cricket has been, it's been played in the spirit of the game. Always. Yes. Absolutely. This current series. See, this side you see all the cricketers. The David Boones, all the players. And this is the turn of the century. So well done. In the 21st century, all these players, Travels, Pontings, Kohlis.
पल जो संजो कर रखे गए हैं ऐतिहासिक रूप से भी समृद्ध हैं और यादों के लिए तो बहुत अहम। तो यादों के झरोखे से हम देख सकते हैं, देखिए पीछे कपिल देव की तस्वीर है वर्ल्ड कप 1983 का उठाते हुए। ऐसी कई तस्वीरों को दिखाया गया, बताया गया उनके बारे में कि क्रिकेट के साथ साथ क्या रिश्ता है भारत का, कितना अहम है। और ये प्रदर्शनी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के किस खेल से प्रेम को भी दर्शाती है। आप देख सकते हैं खचाखच भरा हुआ है ये जो मोटेरा स्टेडियम है, यहाँ पर कई संख्या में भीड़ मौजूद है क्रिकेट के फैंस के रूप में भी, जहां हम देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन फैंस भी मौजूद हैं, भारतीय फैंस भी मौजूद हैं। आज का मैच बेहद अहम क्योंकि इस पिच पर या फिर हम बात करें भारतीय सरजमी पर सुनील गावस्कर मात्र खिलाड़ी थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही भारतीय सरजमी पर दोहरा शतक जड़ा है। तो क्या आज वो रिकॉर्ड टूटेगा, उस पर नजर रहेगी। साथ ही साथ 75 सालों की जो दोस्ती हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कूटनीतिक लिहाज से कितनी अहम, क्योंकि क्रिकेट के साथ कैसे ये रिश्ते और प्रगाढ़ हो रहे हैं, रिश्तों की नई इबारत लिखी जा रही है, उसकी बानगी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और जब हम बात करते हैं क्रिकेट को लेकर, तो अभी जब हाल ही में रायसीना डायलॉग हुआ था तो विदेश मंत्री से पूछा गया था सवाल, तो उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री की नेट प्रैक्टिस यानी कि उनकी दिनचर्या 6 बजे शुरू होती है, अगर वो विकेट का मौका आपको दे तो वो मौका चूकिएगा मत। ये कहीं ना कहीं उनकी बैलेंसिंग ऑफ लाइफ एंड वर्क कल्चर को दर्शाता है, किस तरह से ये बेहद अहम है। तो ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये परिचायक हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया की कूटनीतिक रिश्तों की। और मोटेरा स्टेडियम में इस तरह की भीड़ देखी गई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप आए थे अमेरिका के, जब वो राष्ट्रपति थे उस वक्त भी ये मोटेरा स्टेडियम इसी तरह खचाखच भरा हुआ था। तो आज खास तौर पर प्लेइंग 11 पर नज़र रहेगी, प्रेशर हो सकता है लेकिन फोकस जिस तरह से भारतीय कप्तान ने कहा कि तमाम टीममेट्स का खेलने पर रहेगा। टॉस जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, चुना है पहले बैट करना, तो पिच कितना सपोर्ट करती है बैट्समैन को, फिर बाद में बॉलर्स के लिए कितनी ज़्यादा मददगार साबित होगी ये पता लगेगा आने वाले वक्त में। और बहुत अहम है दोनों टीमों के लिए मैच, जहां ऑस्ट्रेलिया पर ये प्रेशर है कि वो इसे बराबरी पर लाकर खड़ा करना चाहेगी, वहीं भारत की कोशिश होगी कि वो इस मैच को जीते। क्यों शैला? भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते हैं उनको और ज़्यादा मजबूती देते हुए बहुत अहम यहाँ पर ये भी है कि अभी कुछ दिनों पहले मैं एक साक्षात्कार पढ़ रही थी, उसमें कुछ बहुत अहम पॉइंट्स थे। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर जब भारतीय कप्तान के रूप में जब MS धोनी थे तो रविंद्र जडेजा को जब मिलवाया गया तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि अरे ये लड़का बहुत अच्छा खेलता है, ये हमारा ही लड़का है, इसका ध्यान रखिएगा। यानी एक एक प्लेयर को वो बाकायदा नाम से जानते हैं। खिलाड़ियों, एथलीट्स, यंग जो प्लेयर्स हैं उनमें कैसे जोश भरा जाए, हम देखा कई बार संवाद करते हैं। देखिए कि किस तरह से खेलों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को किस तरह से जो छोटे लेवल पर खिलाड़ी हैं उनको भी किस तरह से बढ़ावा मिले और वो नेशनल लेवल पर खेलने के लिए आए, उसके लिए काम किया है। विराट कोहली को देख सकते हैं, तैयारी चल रही है यहाँ पर ऋषभ पंत। और सबसे यहाँ पर ये भी है चला, जैसे हमने देखा था कि जो भाला फेंक है द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, उन्होंने कहा कि जैसे ही वो भाला फेंक कर जब उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो दर्ज किया तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनसे खुद बात की। और एक खिलाड़ी के लिए इतने बड़े ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति जब हौसला अफजाई करता है वो बहुत। तो देखिए टीम 11 पिच पर उतरती हुई और बॉलिंग ऑर्डर जो है वो कितना अहम है कि क्या अटैक जो है वो कर पाएंगे भारतीय खिलाड़ी और ध्वस्त कर पाएंगे जो बैटिंग ऑर्डर है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, वो बहुत अहम है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पूरी कोशिश होगी कि वो इस सीरीज़ को बराबरी बनाए। देख सकते हैं राहुल द्रविड़ हमारे ऑल टाइम डिपेंडेबल वहाँ पर खड़े हुए हैं, जेमी और तमाम जो खिलाड़ी हैं, विराट कोहली को हम यहाँ पर देख सकते हैं, KL राहुल यहाँ मौजूद हैं और जोशो खरोश के साथ साथ देखिए सरजमी भारत की है तो हौसला अफजाई के साथ प्रेशर, फोकस, तीनों ही चीज़ें। और भारत वैसे भी सीरीज़ में आगे चल रहा है तो भारत के लिए ये मैच, वैसे तो दोनों ही देशों के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए मैच तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए तो कहीं ना कहीं भी कुछ ही देर में ये जो मैच है
वो शुरू हो जाएगा। और हमने देखा कि काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। काउंटडाउन स्टार्ट और ऐतिहासिक कई हमने पल देखे कि जिस तरह से इस गोल्फ कार में प्रधानमंत्री ने पूरे मोटेरा स्टेडियम का चक्कर लिया। उसके बाद वहाँ पर जो प्रदर्शनी है उसे भी दिखाई देती है। कुछ ही सेकंड्स का समय जो है वो दिखा रही है। सेकंड्स जो एक क्रिकेट प्रेमी है या रोमांचककारी जो ये सेकंड्स होते हैं वो बहुत अहम होते हैं कि किस तरह से बॉलिंग स्टार्ट होगी और पहले 2 बैटिंग खिलाड़ी कौन उतरते हैं। हालांकि जो ऑस्ट्रेलियन कप्तान है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने टीम में कोई फेरबदल नहीं किया है, तो क्या उलटफेर ना करना उनका मास्टर स्ट्रोक था, ये हम देख पाएंगे कि किस तरह से क्या पहले कुछ ओवर्स में भारतीय बॉलर्स जो मनोबल है उसको तोड़ पाते हैं या एक प्रेशर क्रिएट कर पाते हैं जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं उन पर। ये देखने वाली बात होगी। तो बहुत कम सेकंड, 7, 6, 5, 4, 3 और कुछ ही देर में तो मैच जो है वहाँ शुरू हो जाएगा। और कई ऐतिहासिक क्षण हमने आपको दिखाए। देखिए, तो ये आज का जो मैच बेहद अहम। It's the last test match of a series that's been contested very strongly. You get the feeling it's only just started and we are close to the end. The 4th MasterCard test match, day 1 at this magnificent Narendra Modi Stadium. That's quite a sight today. And this test match played under the backdrop of Indo-Australian friendship. Enormous rivalry on the field, but off the field, getting closer and closer together. You won't see any of that when the action takes place though. Australia won the toss, they decided to bat with an easy decision, and Australia going in with a side that served them so well so far. Still playing just the 2 quicks, Cameron Green and Mitch Starc, and the 3 spinners have done so well for them, and India making the one change in resting Mohammad Siraj. Mohammad Shami comes back, Umesh Yadav keeps his place, and the top 9 rather, who've done pretty well. Remember that it's still 2-1 in this series to India. Wonderful to see when we were coming in. We came in very early today. It was wonderful to see so many people queuing up outside to come in. And as I said, this match being played in the backdrop of India-Australia friendship and collaboration. Anthony Albanese, the Prime Minister of Australia, and Shri Narendra Modi, Prime Minister of India, alongside the 2 captains. We're expected to announce even closer friendship in the days to come. That friendship will end in about 7 or 8 minutes and then recommence at close of play. They went round the ground in an open motorcade today to rousing cheers. Australian Prime Ministers over the years have known to have a great affinity with cricket, starting from Sir Robert Menzies all the way down. So is the Honourable Narendra Modi, never short of wishing the team well. Must be a big moment for a lot of those players. It's always good when your head of state when your Prime Minister wants to come and see you play. Just remind you on the field itself, Australia, as I said a little while ago, Australia unchanged, India just the one change. They will be batting first on a surface that is pretty different from some of the surfaces we've seen so far. Had a nice little cultural program for a brief while before the play started. And now the 2 teams will line up in the presence of their respective prime ministers for the national anthem. It's always a very special moment if you're out on the field for it. So let's join the 2 teams with the national anthem.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे And so to the cricket. India versus Australia. 75 years of friendship. It was to Australia that independent India first sent a cricket team out. November 1947, that first test match in Brisbane, that India first played under the banner of India. And now a little over 75 years later, here in Ahmedabad, they will take on Australia once again in a test match that will decide how this series ends. Will it be 3-1? Will it be 2-2? We don't like draws these days. Matthew Hayden's alongside me, so is Sunil Gavaskar. We'll hear from them very shortly as the two Prime Ministers find their way to where they're going to sit to watch the game. Yeah, the flags are aflutter. You were down there as well, Haydos. It's quite an occasion. Yeah, 100%. A great occasion for the diplomatic enclave, but also the sporting community as a whole. Of course it is. It's a test match. It's a big series. It's arguably the biggest now for Australia. This India-Australia rivalry, 75 years young now, just plummeting up to stratosphere. Unbelievable scenes here. 1 lakh for those at home. That's 100,000 people. That's Boxing Day test match. That's the MCG, something that we've been accustomed to. But here we are all the way in the north. In Ahmedabad, 100,000 people looking forward to a test match on a good surface too, it must be said. Steve Smith winning the toss. Had absolutely no problem in batting first. How big is that toss, Danny? I think it's going to be, in India, always the toss is crucial. Having said that, for the first 3 matches, the teams that won the toss lost. So clearly, I think when you bat first, you've got to put up enough runs on the board. Australia did put runs on the board in Nagpur, but India batted really well because the pitch eased up a little bit when India batted. So this is a crucial toss. Australia will be looking to carry on from what they did at Indore in the second innings when Travis Head batted so well and took the attack to the opposition, and Labuschagne played as he normally does, a very composed innings. Usman Khawaja has been in tremendous form. The Aussie team remains unchanged, and Sonny, as to your point, it's all about momentum cricket, isn't it? Steve Smith now captain of this side. Pat Cummins, we're wishing him well at home, hoping things are going well. Khawaja Head into the side, forced his way back in and performed admirably since. Labuschagne and Hanscom have been handsome inside the middle order as well. Green, such an important member of this cricket team, isn't it? Just adds great balance. Of course, the fast bowling unit of Stark, and then the 3 spinners that have been spinning their web right the way through this series. Alex Carey's also done an excellent job behind the stumps. And India, of course, has been combining really well in the first 2 matches. They've played really well this time around. They've pretty much got the same team. Of course, Mohammad Shami comes in for Mohammad Siraj, but the batting looks pretty much the same.
Bharat down the order at 7. Ashwin, Akshar, who's batted exceedingly well in the series. Maybe he should be batting at 7 instead of Bharat. But this looks like a very well balanced team. 2 new ball bowlers and 3 spinners. It's a very long time since a touring side has won 2 test matches in India. You're going back to that series against England 2012-13. Australia back in 2004. Since then the record is 2-1-2, lost 12. And that just puts in perspective this series. It might be 1-2 to Australia, but it's 2-12 overall. As Hedos just said, what happened 10 years ago doesn't count what happens now. But just the two of you have played so much test cricket. There's a big gap between 3rd and 4th that was not meant to be. Would that affect the players at all as they turn up for this one? Yeah, there was a bit of a gap, but I think that's probably the conditions here, Harsha, being the way they are. It's all-consuming cricket, and sometimes it's nice to get away from the game. I think that's probably the conditions here, Harsha, being the way they are. It's all-consuming cricket, and sometimes it's nice to get away from the game. Talking to the players, they play a little bit of golf, you know, they have some time out amongst the game. Of course the intensity is going to be there come this first ball. And in fact the intensity's been here since at least 2 hours ago. Crowds are starting to arrive here 2 hours ago for this match. And he'll be key. Usman Khawaja has been already in the series. He's been really fantastic so far. Now that Australia have won the toss, this opening partnership, as always, is key, absolute key. And also just to keep the ascendancy as well around that momentum coming from indoor. As is the opening partnership in our commentary box. I think there might have been a stat about the maximum runs scored by someone at number 1 and at number 2. And I didn't think I'd say this, and I'm very happy to say this. With the sound around, can the umpire hear a nick? Not going to be easy. But the fact remains that it's never an easy job for the umpires. Even though there are hardly any people at the ground, it's a tough job. They stand in the sun or in the cold for 6 hours, 6.5 hours. Here's the first ball. Well, here was the first ball. Legally, he's got to ball it again. That's gone somewhere else. What track are you bowling on? Well, it reminds me, Sonny, of the ball that Harmison bowled in the Ashes series to Justin Langer, who was on strike. Look at that, that's barely on the cut surface. Gone to second slip almost. I think it could be that he might not have got a proper footing. That's what the fielder is trying to do. When he landed, maybe the foot slipped. But that's not a good omen. That is certainly not a good omen as far as India is concerned. Such a big build-up and the first one's a wide. And in Shami's case, you always get the impression he takes a little time to warm up. And that's why, you know, resting him for the, if he was rested, if he had a niggle, that's another matter. But resting him for the Indore game, when there had been an 8-day break between the Delhi Test match and the Indore game, wasn't such a smart move. He's the kind of player, look at him, he's the first 2-3 balls, they're pretty much military medium. And that used to be the difference between the great fast bowlers. Their first ball asked you questions. That's how it's got to be. Batter is nervous, he's not yet off the mark. If he sees the first 2 balls go harmlessly by, he's got an opportunity to see what the pitch is doing. Is there any extra bounce? He can then, you know, mentally start to sort of relax us that little bit. The great bowlers were at you straight away. First ball, something like this. Yeah, it's so nice to get a sider as an opening batsman. It's a real freebie. It still doesn't change the next ball. It could be an absolute jaffa, but it gives you that advantage, and that's what you're looking for when the nerves are there, and there's going to be nerves. You can hear it through your screens. Listen to the sound as Mohammad Shami runs into bowl here. 100,000 people starting to scream. That's pressure. Listen to it. More wide. There hasn't been one of the centre of the bat yet.
No control, the ball's got a mind of its own at the start of this game. Yes. There again, he goes looking to get the ball to curve away from the left-hander, but he's just not getting his line right. Look how far away it is. It is so tough for the wicketkeeper. It's going to be called wise because it hasn't gone away from that marker, which indicates a wide. I think if you know that Mohammad Shami is the kind of bowler who likes to be in rhythm, maybe you shouldn't rest him. Yeah, well, it begs the question what we don't know, because that's definitely what we do know, Sonny. Bowlers love the ball. When you think of the greats of all time, when they couldn't get enough Test cricket, what would they do? Go over and play some county cricket and bowl some more. Ambrose, Bishop, Walsh, they all played over in those county divisions. Malcolm Marshall, they kept bowling. Now, the experts around the tracks in these high-performance cultures will tell you that it's important to get in the gym, and of course it is, but there's nothing like exercising as to what your specifics are, and bowling is a big part of that. Now one finds the bat, but only the edge for 4, so it's quite a first over this. Australia are already up to 10. Yes, you're absolutely right. I think you can get him to the gym. He's played it well. He's taken the bottom hand off the handle, so there is no carry as far as the edge is concerned. It will drop short. It's dropped well short. But I think it's important to get your bowling muscles going. In the gym, you don't get your bowling muscles going. You get other muscles going. It's 10 for no loss after the first over. बैग किसका है? मेरा। No fruits on plane. नहीं है। अच्छा, ये क्या है? देखो, किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का जेरोक्स। चैम, मारते रहना है छक्का। हाँ। तो गो होम एंड हैंड वॉश पक्का। देखिए स्पीकर स्वागत, हमने आपको दिखाया कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीता और बल्लेबाजी करने के लिए उतरी है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इस वक्त लाखों की संख्या में दर्शक मौजूद हैं और हमने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने मैच शुरू होने से पहले जिस तरह से प्रदर्शनी का जायज़ा लिया। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री भी वहाँ पर मौजूद हैं और ये जो गावस्कर ट्रॉफी है उसका अंतिम मैच है और कोशिश होगी भारत को कि वो भारत इसे जीत के साथ ख़त्म करे। वहीं कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया पर भी कहीं ना कहीं प्रेशर है कि वो उसे बराबरी पर लाकर खड़ा करे। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ये मैच वहाँ पर देखने पहुँचे हैं। ऐतिहासिक क्षण हम देख सकते हैं कि किस तरह से भारत जो बॉर्डर गावस्कर श्रीलंका सीरीज़ है उसमें 2-1 से आगे है। ऑस्ट्रेलियन जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, कोई फेरबदल नहीं किया गया, लेकिन इस बार क्या जो भारतीय बॉलर्स हैं उन पर उनका क्या जादू चल पाएगा। सबसे कंजूस बॉलर की अगर मैं बात करूं रनों के मामले में रविंद्र जडेजा हैं, क्या इस बार भी वो कंजूसी दिखाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और जिस तरह से दोनों देशों के प्रधानमंत्री मैच देखने के लिए गए हैं, कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का बहुत उत्साहवर्धन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक मैसेज ये भी है कि खेल कूद के जरिए किस तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की बात है। वो दोनों देशों के प्रधानमंत्री जिस तरह से वहाँ पहुंचे हैं, तो खेलों को प्रोत्साहन देने की बात हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो करते ही रहे हैं। हमने पिछले कुछ समय में देखा है आंचल। बिल्कुल, सभी खिलाड़ियों को, और साथ ही साथ आज भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैच शुरू होने से पहले जो राष्ट्रगान गाया जाता है, प्रधानमंत्री वहाँ खुद मौजूद थे, तो ये परिचायक है कि किस तरह से खेलों से उनका आत्मीय जुड़ाव है। हमारी ये पेशकश लगातार जारी रहेगी, इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।
चलिए अब ब्रेक पर जाने से पहले कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम चाहेंगे कि हम अपने दर्शकों के साथ शेयर करें। पहला जो एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया है वो ये है कि इस पिच पर आज बहुत लोगों को उम्मीद है, हालांकि ये पिच स्पिनर्स की पिच मानी जाती है, इसमें कि ये हाई स्कोरिंग पिच है, तो क्या बॉलर्स की बल्ले बल्ले हो पाएगी? जो स्पिनर्स हैं, स्पिन गेंदबाज अपनी स्पिन पर वो कमाल दिखा पाएंगे या नहीं? दूसरी बात शैला यहाँ पर ये है, ब्रेक पर जाने से पहले अपने दर्शकों को बताएं कि गावस्कर ट्रॉफी में सुनील गावस्कर ने इसी सरजमी पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 दोहरा शतक जड़ा था। क्या वो जो रिकॉर्ड है वो भारतीय बल्लेबाज या कि कप्तान या फिर कोई और आज तोड़ पाएगा? इस पर रहेगी नजर, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का। तीन महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।